लॉग ऑफ करके वापस आता हूँ। यस सर। ओके सर, थैंक यू। गजब बेइज्जती है। के तू ले ले क्लास। लाओ 48,000 डालो अकाउंट में। सेलिंग के बाद दे देंगे। Okay, how do you read me now? Good sir. Loud and clear sir. And how do you see me? विजिबल सर, सर, वेरी क्लियर। Blur sir. ब्लर सर, अभी अभी blur है। अभी ब्लर आ रहा है, Blur sir. अभी भी ब्लर है, तब क्या करें? Yes, सर। थोड़ी देर क्लियर आया था सर, फिर से ब्लर होने लग गया। तो ये ओवरऑल नेटवर्क का इफेक्ट होगा मेरे ख्याल से। आई एम ऑन। चलो एक बार तब Yes, मैं फिर sir. से करता हूं क्या कि एक बार ब्रॉडबैंड ऑफ करके मोबाइल डेटा पे देखता हूँ। अभी तो ब्रॉडबैंड पे चल रहा था, पता नहीं, हो सकता है ब्रॉडबैंड में कुछ दिक्कत हो। सर ओके, आया था क्लियर, लेकिन फिर से हो गया। हाँ, तो वो तो डेटा तो बीच बीच में हो, तो एक बार चली गई, दूसरी डेटा जाने में टाइम लगेगा या दिक्कत होगी तो फिर तो ब्लर हो जाएगा। ओके, लेट मी सी हाउ डू आई वर्क ऑन मोबाइल डेटा। जस्ट 1 सेकंड, आई एम लॉगिंग ऑफ। मोबाइल डेटा पे Okay, आके sir, देखता thank you. हूँ। ओके, ओके, हाउ इज इट नाउ? सर क्लियर है सर। हाँ सर इस बार क्लियर है क्लियर है? सर। अब सही लग रहा है सर। ओके, तो क्लियर है सर। ब्रॉडबैंड पे था, ब्रॉडबैंड वाईफाई से चल रहा है, वहाँ दिक्कत हुई। बहुत बारिश हुई है कल रात में, कल दिन भर, परसों रात से इनफैक्ट बारिश हो रही थी। अभी सुबह में थोड़ी, तो हो सकता है कहीं यहाँ प्रॉब्लम। तो बारिश हो Yes, रही है। sir. यहाँ भी बारिश हो रही है। हाँ, वही तूफान के चलते ही हुआ, तौते तूफान या क्या था ना, उसी के चलते। Anyway, so shall we begin then? We were talking about the gyroscope. So first of all, we have to understand few things about gyro or rotary motion. The terms which are used in case of rotary motion, we will relate it with the linear motion also, with which you are more familiar. Linear motion के साथ ज़्यादा familiar है, rotary motion के साथ उतनी familiarity नहीं होगी, तो हम relate करते चलें। Angular velocity is the angle covered by a radius, angle swept by the radius in unit time. ये रेडियस है, इसने कितना एंगल कवर किया यूनिट टाइम में, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें दो चीज चाहिए, एक एंगल और दूसरा टाइम। तो एंगल कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज और एंगल कैन बी मेजर्ड इन रेडियंस। रेडियंस 360 degrees we all know,
but this 360 degree is also 2 pi radians. The angle in a circle is 2 pi radians. That means 6.28 radians. Pi means 3.14, 2 pi is 6.28. So this is the angular velocity. As we said, degrees per minute, degrees per second, radians per second, ये सब यूनिट हो सकते हैं इसके, बट मोस्ट पॉपुलर जो हम लोग यूज करते हैं वो आरपीएम है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, क्योंकि ये घूम तो रहा है, अब एक एक सेकंड में हम कितने बार चक्कर काट रहा है तो उतना डिग्रीज हम बताएंगे, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. So the most popular unit used for angular velocity is RPM, revolutions per minute. एक मिनट में कितने चक्कर काटता है, which you are aware of. RPM का नाम आपने सुना होगा. पंखा तो 300 RPM, मोटरसाइकिल तो 5000 RPM पे, like that. Then there is another term, something called torque. What we call, we know that a force is applied on some body. If a force is applied on some body, the body will move in a direction, in the direction of the applied force. But if an object is free to rotate about an axis, and this force, if it is applied at a distance away from the axis, not in the line of axis, but away on the axis, then it makes the object turn about that axis. So this force is basically turning the wheel if it is applied at a distance away from that. अगर ठीक एक्सिस के ऊपर लगाएंगे, इसी लाइन में लगाएंगे तो it gets pushed. It gets pushed like this. But same force, if I apply here, it begins to turn. So force we know, it moves the body, but here the force is rotating the object about an axis. This force is called moment. Moment is basically a turning force. Turning force, that means it has the tendency to rotate something about an axis. आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे को धक्का देते हैं हाथ से, क्या किया आपने? What did you do? You Force लगाया सर. You applied a force, but this force is turning into a moment. This force is creating a moment that opens the door about the axis. यहां से खुल रहा है ऐसे. कितना टर्निंग इफेक्ट डिपेंड कि आपने धक्का कहां लगाया. तो नॉर्मली हैंडल रहता है उसके आसपास में लगाते. हैव यू ट्राइड ओपनिंग अ डोर by putting all the pressure this much away from the axis, जहां पे कब्जा होता है उसका, उसके इतने नजदीक में अगर फोर्स लगाओ तो दरवाजा खुलेगा? तो बहुत ताकत लगेगी. बहुत ताकत लगेगी. मतलब वही मोमेंट क्रिएट करने के लिए फोर्स हैज टू बी दिस मच, बिकॉज डिस्टेंस इज ओनली दिस. मान लो 1 मीटर का दरवाजा था, आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जो टर्निंग मोमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर. सो टॉर्क इज यूनिट इज न्यूटन मीटर. आप इंजन वगैरह का स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे गाड़ियों का, तो उसमें भी लिखा होगा टॉर्क 20 Nm, न्यूटन मीटर. सो आपने 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा दिया था जब आप हिंड से 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा रहे थे और दरवाजा खुल गया. That means 1 Newton meter is good enough to open the door. अब इसको अगर आप 10 सेंटीमीटर में आ जाएंगे 0.1 पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0.1 मीटर. 0.1 into how much will give you 1 Newton meter, जो कि रिक्वायर्ड खोलने के लिए? You have to apply 10
Newton force in order to open the door. So force 10 times required. Distance reduced by 1/10, जो 100 सेंटीमीटर था 1 मीटर, उसको 10 सेंटीमीटर कर दिया आपने, 1/10 किया, तो फोर्स आपको 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा. So this is moment. जब मैं एक ढक्कन खोलता हूं तो मेरे ये फिंगर्स इसको इस तरफ को घुमा रहे हैं या नहीं, इधर से इधर को घुमा रहे हैं. यस सर. लेकिन उस समय ये क्या कर रहा है, ये इधर को कर रहा है या नहीं. मैं यूं घुमा रहा हूं तो अंगूठा इस तरफ को घुमा रहा है और उंगलियां इस तरफ को घुमा रही है, दो फोर्स लग रहा है. ये भी इसको इधर को घुमा रहा है, ये भी इसको उधर को घुमा रहा है, तो इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग मोमेंट. दो फोर्स लग रहे हैं. यस और नो. Yes, sir. यस सर. तो यस सर. दिस इज ट्वाइस द मोमेंट. एक तो यहां से सेंटर से डिस्टेंस इधर का और एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर फोर्स लग रही है, एक इधर फोर्स लग रही थी. तो डिस्टेंस तो ये दो हो गए रेडियस के बराबर, और फोर्स में लगा ही रहा था, इधर को इधर और इधर को दूसरी तरफ. सो दिस इज कॉल्ड कपल. मोमेंट तो हो गया एक तरफ को, ट्वाइस द मोमेंट इज बेसिकली कपल. लेकिन सर एक तरफ मूवमेंट होगा तो फोर्स भी दो टाइप की लगेगी ना, स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगी, बाद में कम लगेगी. तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना. आप दरवाजा हल्का सा उंगली से छू के खोलो या जोर से खोलो, जितना फोर्स लगाया उतना टर्निंग मोमेंट होगा. उंगली से छू के नहीं खुलती, भारी दरवाजा तो नहीं खुलेगा. एक बार जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि पहले बंद था तो फ्रिक्शन से ना को रोक रखा था ढक्कन को, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. जब आपने घुमा दिया और वो फ्रिक्शन खत्म हो गई, जहां चिपका था वो खत्म हो गई, तो थोड़े से फोर्स से खुल जाता है. इसमें क्या प्रॉब्लम है? यस सर. सो पहले जो जोर लगाना पड़ता था क्योंकि वो टाइट था और वो फ्रिक्शन से पकड़ा हुआ था, तो ज्यादा फोर्स चाहिए थी. दरवाजा भी बंद रहता है, अगर चिपका हुआ रहता है तो नहीं खुलता है. एक बार धक्का मारा आपने और चौखट से अलग हो गई तो आराम से खुल जाता है. तो वो तो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा. और यही अगर चिपका हुआ नहीं हो, दरवाजा इतना भारी हो, तो फिर नहीं खुलता, फिर ज्यादा जोर लगाना पड़ता है. आपको चक्का घुमाना हो साइकिल का और आपको चक्का घुमाना हो ट्रक का, दोनों फ्री है घूमने के, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सिर्फ बेरिंग का जो है सो है. फोर्स रिक्वायर्ड हाउ मच? साइकिल में कम, ट्रक वाले में ज्यादा. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अभी what did we say? That we have angular velocity, we have a turning moment, what we generally call torque. Torque is more popular name for moment. Moment is the physical term, I mean term that is we use in physics, but torque is synonymous with moment. Basically वही turning force है. That means a torque is a force applied at a distance away, which basically nahi. Torque is the result when a force is applied at a distance away. Moment is force into distance, and what is created is torque. What is torque? Something that rotates, a force, kind of force that rotates an object about an axis. इतना समझ में आ गया है हमें? Yes, sir. Okay. Now why we are talking about this? Because we are going to use a wheel. सर समझ आ गया, लेकिन ये टॉर्क जो है ये जायरोस्कोप के इस व्हील में कैसे एक्ट करेगा? जायरोस्कोप जब हम बनाएंगे और जायरोस्कोप के बाद कंपास बनाएंगे, तो ये टॉर्क जो है इट इज इन कांस्टेंट प्ले. बिना टॉर्क के आपका कंपास नहीं चल रहा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉर्क. सर मैं वही तो समझ रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्रिएट कैसे हो रहा है? क्रिएट हो रहा है फोर्स लगने से. भाई आप ये देख रहे हो ना,
आप देख तो रहे हो, ये यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये घूमता है क्या डिस्क? नहीं घूमता नहीं ना। सर। इस एक्सिस नहीं के सर। डायरेक्ट ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इन लाइन ऑफ द एक्सिस, इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, तो ये तो धक्का दे दे रहा है पूरे ऑब्जेक्ट को ना, घुमा नहीं रहा। बट फोर्स व्हेन अप्लाइड एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस, नाउ इज इट अवे फ्रॉम द एक्सिस, लाइन ऑफ एक्सिस से? यस सर। यस सर। by a distance of this much? So अगर Yes, मैं sir. यहाँ फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये घूम जाता है ना। यस सर। तो ये जो फोर्स घुमाने का फोर्स है, दैट इज टॉर्क। सर वो तो एक्सिस से ऊपर नीचे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो मूव करेगा तो सर। ये फोर्स जो है सर हम एक्सिस पे अप्लाई कर रहे हैं ना सर? नहीं, एक्सिस से दूर एक्सिस के आप ओके, ये मैं एक्सिस बाद के में ऊपर या नीचे सर? मैं ये बाद में दिखाना चाहता था। दिस इज अ फ्री जायरोस्कोप, आपके लिए बनाया है मैंने। दिस इज अ फ्री जायरोस्कोप, इट कैन रोटेट, it can rotate and it can rotate, ठीक है। अब it can rotate, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करेगा क्या? यहाँ पे अगर फोर्स लगाऊं तो इट विल रोटेट। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, मैं इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं, अपनी तरफ दबा रहा हूं इसको, तो ये घूम रहा है क्या? लेकिन इस एक्सिस से साइड में करूंगा तो घूम गया या नहीं? यस सर। तो जब मैंने यहाँ पे सीधे एक्सिस पे लगाया फोर्स, ये वाली एक्सिस के ऊपर में लगाया फोर्स, तो ये तो नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा ना। हाँ सर, नहीं घूम रहा। लेकिन अगर इससे हट के मैं यहाँ पे लगाऊं तो घूम गया ना। हाँ सर। सिंपल, जो ये तो मैं और दिखा रहा हूँ। एक्सिस जिस एंड पे कनेक्ट है सर वहां लगाएंगे तब भी तो घूम जाएगा ना। एक्सिस जिस एंड पे कनेक्टेड है, बताओ इसमें कहाँ पे देखा? जो मेरे सामने फेस कर रहे हो आप, इसमें हल्का सा होल है, यस। यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे तो ये भी तो एक डायरेक्शन में घूम जाएगा ना सर। किस डायरेक्शन में घूमेगा? मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ फोर्स। हाँ सर, आपकी तरफ जा रहा है। हाँ, तो ये तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, फिजिकल ये मूव नहीं हो रहा ना। यस सर। वो रोटेट नहीं हो रहा है, बट मूव कर रहा है हो बस। रहा है। रोटेट, एंगुलर मूवमेंट है। डिस्प्लेस हो रहा है, यस सर। वो डिस्प्लेस हो रहा है। यस सर। तो लीनियर मोशन क्रिएट कर रहा है वो। जब एक्सिस पे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी विल मूव, इट विल गेट डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। बट उसके अगर एक्सिस पे फ्री है और एक्सिस से दूर लगाओगे तो वो घूम जाएगा अपने एक्सिस पे ही, वहीं पे रहेगा लेकिन घूम जाएगा। यस सर। हाँ सर। फोर्स लगती है पंखे में, पंखा उड़ के वहां चला जाता है क्या? मोटर जब घूमती है तो क्या हो रहा है? कुछ घुमा रहा होगा ना उसको अपनी जगह पे। पर उसका यस सर, एंगुलर सिर्फ मूवमेंट फैन ही एक घूमेगा डायरेक्शन ना। में है ना, और इसका बहुत सारी डायरेक्शन में लग रहा है ना सर। ओके, तो इसीलिए तो मैंने पहले ये दिखाया था आपको। इसमें तो एक ही है। यस सर। मान लो आप यहाँ पे फोर्स लगाओ एकदम सेंटर में, तो क्या होगा? ये इधर को जाएगी या नहीं? तो सर डिस्प्लेसमेंट ही होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर होगा पकड़ सर। रखा, यहाँ पे लगाऊंगा तो घूमेगी या नहीं? यहाँ पे अगर एक्सिस रखा दिया तो यहाँ पे घूमती है या नहीं? नहीं समझ आया? सर नहीं सर। एक्सिस पे अगर इस पे रहेगा तो फिर कहाँ घूमेगा अभी? ऑल राइट, everybody take out a pen, everybody take out a pen, hold a pen here like this. Ganesh, Prince, especially you were asking question.
hold a pen. Yes, sir. Yes, sir. Now take a finger and apply the force here. What is happening? सर रोटेट तो नहीं कर रहा है बट वो सिर्फ डिस्प्लेस हो रहा है बस. आपका हाथ हिल जाता है ना, आपका हाथ हिल रहा है ना. Yes, sir. Displacement हो रही है. Okay, now apply the force here. What is happening? रोटेशन. Sir, ये What is rotation happening? होने लग रही है. So force when applied at a distance creates a turning force. Is it correct or not? Yes, sir. समझ गया सर. Yes, sir. And the force is applied not at the axis but at a distance away from the axis. That But sir, creates a ये तो turning एक्सिस moment. का एक एंड ही हो गया ना दूसरा. ये वाला Yes, sir. कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं. Yes, sir. अभी क्या हो रहा है? अभी भी डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है सर. अच्छा, यहाँ पे लगाओ. डिस्प्लेसमेंट ही है सर. डिस्प्लेसमेंट है या घूम रही है? वो तो आप चूंकि यहाँ पे एकदम फ्री नहीं, यहाँ पे पकड़ रखा है ना इसको, तो आपको ये लग रहा है. Yes, लेकिन sir. अगर ये फ्री होता ऐसा, तो ये तो घूमती ना. Yes, sir. सो ये जो घूम रहा था, अब आप ये देखो कि यहाँ फोर्स लगा के आसानी से घूमता है या यहाँ फोर्स लगा के आसानी से घूमता है. एंड पे सर. सी द एंड डिफरेंस. पे सर. एंड पे ज्यादा घूमता है. एंड पे ज्यादा घूम रहा है सर. तो डिस्टेंस बढ़ा दिया तो टर्निंग फोर्स ज्यादा हो गई, इसलिए आराम से घूम रहा है. हाँ वो सर. नहीं है ना बात. मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब जो फोर्स है वो इन द एक्सिस के एक एंड पे ही लग रही है ना. जैसे आपने इसके बीच में एक व्हील फंसाया है तो आप इसके एक एंड पे ही फोर्स लगा रहे हो ना, तभी वो कनेक्टेड व्हील घूम रहा है. नहीं समझा तुम्हारी बात. एंड पे लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे फ्री है घूमने के लिए या नहीं है? ये सर ये समझ गया मैं आपकी बात की मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है. अब इसी पेन पे जो आपने व्हील लगाया हुआ है सर. एक सेकंड, व्हील कहाँ गया? ओके, नाउ आई हैव द व्हील, टेल मी. ये सर तो मतलब एक्सिस के एक एंड पे ही किसी डिस्टेंस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये व्हील रोटेट हो रहा है ना सर. व्हील लगाने के लिए यहाँ पे मैंने, जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, यहाँ पे लगाते हैं तो नहीं घूमता. लेकिन Yes, sir. अगर इसको मैं इतना ऊपर में लगाऊं, थोड़ा सा ऑफसेट, तो ये घूमेगी या नहीं? ये सर. और थोड़ा और ज्यादा दूर लगाऊं और घूमेगी या नहीं? ये सर. कितना घूमेगी? पूरा ही घूम जाएगी सर. मतलब 360 रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी. वो तो जाएगा, लेकिन जो घुमाने की टेंडेंसी है वो ये वाली फोर्स जीरो डिस्टेंस पे जीरो था, तो Yes, यहाँ sir. पे थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ Yes. और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा. जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना आराम से घुमा पाएंगे. ये सर. डिस्टेंस मोर, फोर्स लेस. ये सर. थैंक यू सर. अंडरस्टूड और Yes, नॉट? वादा है. पॉइंट में भी है सर. Come again, गौतम. पिवट पॉइंट सर. जैसे जहाज को अगर टग लास्ट में सर मूव करवाता है सर, जहाज भी घूमता है जो. एकदम सही बात. 1000 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. आपने नट बोल्ट खोला है मैनहोल का, टैंक मैनहोल का नट खोला है? कभी स्पैनर यूज किया है? यस सर. ये सर खोला है. यस सर. हाँ सर खोला है. आता है तो क्या करते हो? जोर सप्लाई लगाते हो, ज्यादा नहीं सर. खुल रहा, और ज्यादा जोर लगाना चाहते हो तो क्या करते हो? आप एक उसमें पाइप फंसा के थोड़ा दूर से घुमाते हो उसको. यस सर. सर पहले थोड़ी सी ऑयलिंग करके छोड़ देते हैं, फिर आधे घंटे बाद आके खोल लेते हैं. क्या? अच्छा, WD-40. थोड़ी ऑयलिंग करके छोड़ देते हैं, फिर आधे घंटे बाद आके सर खोल लेते पाइप लगा के खोल लेते हैं सर उसी टाइम. सब पाइप हैं. लगा देते हैं सर. स्टैंड कर देते हैं ताकत उसका. लगती है सर. ये गधा मजदूरी ट्रक वाले भी तो अपने टायर पाइप लगा के ही खोलते हैं. सर पाइप लगा के एकदम- खोल देते हैं उसी टाइम. टाइम नहीं वेस्ट पाइप लगाने से क्या होता है? से ज्यादा फोर्स लगती है. गधा कैसे? मजदूरी. टॉप ये जो कर रहा है. कैसे फोर्स लगती है ज्यादा? सर टॉर्क बढ़ जाता है. और ना होता सर है. टॉप होता है
फोर्स कम लगती है। टॉर्क बढ़ कैसे जाता है? डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है डिस्टेंस भी बढ़ जाता है ना सर। ने बढ़ा दी, आपका ताकत तो उतना ही था, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ा दी तो टर्निंग फोर्स बढ़ गया। यस सर, ये बेस्ट एग्जांपल है सर। फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर हो गया सर। हो गया क्लियर? तो वी विल सी दिस हाँ ऑन सर, हो दैट। गया। ठीक है, अंडरस्टूड। सो नट पहले खोल रहे थे, वो फ्रिक्शन से जाम था, यहां से लगा रहे थे तो नहीं घूम रहा था, क्योंकि डिस्टेंस इतना, फोर्स तो मेरी जो है सो है, डिस्टेंस इतना था तो नहीं घूम रहा था। अब मैंने एक पाइप लगा के इसको दूर कर दिया तो आई गेट मोर लीवरेज, आई गेट मोर टॉर्क, आई कैन क्रिएट मोर टॉर्क बाय द सेम फोर्स। फोर्स उतना ही, डिस्टेंस बढ़ा दी, टर्निंग फोर्स बढ़ गया, घूम गई, खुल गई, दिमाग की बत्ती भी जल गई लगता है। ठीक है, यस सर। okay, good. So we'll go to the slide, we'll talk about this few things. Okay. So we have seen angular velocity, we have seen something called moment, it turns. We also talked about torque. Then what we are trying to talk about is the next term, which is something like angular momentum. What is angular momentum? कंपेयर दिस एंगुलर मोमेंटम। अभी मालूम नहीं कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज, बहुत सिंपल चीज है। लीनियर मोमेंटम क्या होती है? लीनियर मोमेंटम एक मूवमेंट जो लाइन में हो। मूवमेंट जो लाइन में, वो मोमेंटम हो गया। सर नहीं पता सर। मास इनटू वेलोसिटी। क्या बोलते हो कनिष्क? मोमेंटम जैसी चीज नहीं पता है? एनीवे, चलो ठीक है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक कार आ रही है और वो पोल से टकराती है, तो एक छोटा सा, मान लो छोटा सा पेड़ है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, धीरे से आ रही थी, ढलक गई, ब्रेक लूज था उसका या जो भी था, तो आकर टकराई इससे, धीरे धीरे आ रही थी, क्या होगा? गाड़ी आकर के थोड़ा सा लग के ऐसे रुक जाएगी, रुकनी चाहिए। यस सर। सही। वही गाड़ी अगर तेजी से आ रही हो, 40 के स्पीड पे, 50 के स्पीड पे, और पेड़ से टकराई तो क्या होगा? सर तब आगे जाएगी ही जाएगी वो। पेड़ टूट जाएगा, डैमेज होएगा, उसको रगड़ के और भी आगे निकल जा सकती है। ड्राइवर मर जाएगा। Exactly. So, what was the difference between the two cases? One, the mass of the car was same, only the velocity was different. So, what we are saying that the car had a momentum, which is product of mass and velocity. Given mass, given velocity. Mass ज्यादा momentum, mass कम momentum. Similarly with velocity ज्यादा momentum, कम velocity कम momentum. So how do we define momentum? It is the property of the moving body to maintain its movement, and if you want to stop that movement, you have to apply some force. गाड़ी अगर आ रही थी, उसको रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। How much force will be required to stop that car will be measured by the momentum. More the momentum, more the force required. Smaller the momentum, less force required. एक ही स्पीड से एक साइकिल आ रही है, एक कार आ रही है, आप दोनों को रोकते हैं, इसको आसानी से रोकेंगे? साइकिल को सर। क्यों? दोनों एक ही स्पीड से आ रहा था, क्यों रोकेंगे आसानी से उसको? मास कम है सर। उसका मोमेंटम कम है। मास कम है इसलिए मोमेंटम कम है, तो फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू अ व्हील। अगेन
ट्रक का व्हील एक है जो घूम रहा है, उसी आरपीएम पे एक साइकिल का व्हील घूम रहा है। आप यूं करके ग्लव्स पहन, यूं करके साइकिल का भी व्हील रोकते हैं, यूं करके ट्रक का भी व्हील रोकते हैं, कौन रुकेगी आसानी से? साइकिल का सर। साइकिल का ही सर। क्यों? दोनों तो एक ही आरपीएम पे घूम रहा था। मास सर। सर मास। अलग अलग, जो मास ज्यादा थी, मास डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। What was the difference between the two was the angular momentum. जैसे वो linear momentum साइकिल और कार का था, अलग अलग linear momentum, mass into velocity. यहाँ पे also there is, but now we are calling it angular momentum. Angular momentum, which is also a product of, not product directly, but which is also controlled by the mass of the rotating body and the velocity at which it is rotating. So velocity of rotation, तो वही हमारे पास मालूम है, angular velocity बोलते हैं, how many RPM. So other factor is that the mass is also dictating how much of angular momentum will be there. So angular momentum will make the thing go or keep on doing the same thing. जो चीज हो रही है वही चीज, basically it is derived from the Newton's law of inertia. What is Newton's law of inertia? Yes, Divya. Sir, any body in the universe, if it is going at a particular motion, it will continue to be in that motion unless and until external force is applied. Okay, what if it is outside this universe? We cannot apply the force. Joke. Okay, so you are right. Anything which is either at rest or in motion will continue to maintain its state of rest or motion until and unless an external force is applied. So अगर एक पत्थर है तो डेली मैं पत्थर वहीं पे पड़ा देखता हूँ, हिलता नहीं, जब तक कि मैं इसको पैर से ठोकर नहीं मार देता या गाड़ी आके उसको इधर उधर छिटका नहीं देती, तब तक वहीं पड़ा रहता है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है। दूसरा, कार को हम देख रहे थे, कार चली आ रही थी, वो एक मोशन में थी, मोशन में ही रहना चाहती है। सामने पेड़ आ गया तो भी तोड़ तड़ के निकल जाना चाहती है, आदमी आ गया तो भी मार के निकल जाना चाहती है। So momentum is something that keeps a body in motion in the same way it was happening, and that momentum is given by mass into velocity. यहां भी हमने देखा it is mass into velocity. रोटरी मोशन में भी जितना हेवी होगा व्हील, उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। अगर हल्का होगा तो उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, या वेलोसिटी कम हो, एंगुलर वेलोसिटी कम। So how does this mass play a role in the angular momentum? How this mass is going to affect the momentum of a rotating body? Mass, not only the mass, but the mass has a different role to play in angular momentum. We'll go to the board to understand this, how the angular momentum changes because of the same mass. So let me set it up. All right, board visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we said that if a wheel is rotating about an axis which is having a mass m and angular velocity, okay, whatever, angular velocity,
then there will be a momentum. Now I have got 3 rotors. हम साइड से देख रहे हैं, अगर साइड व्यू लेंगे हम उसका, so you are going to look at this from this view. So आपको ये वाला एंड दिख रहा है. I made a rotor which is like this. आप सामने से देख रहे हैं, एक्सिस इसका ऐसा है, and it is moving, mass is m and angular velocity is, let us say, x. Then I design another one in which the rotor I have designed has got different kind of construction. Radius here is r. Here also the radius is r. Same mass, same angular velocity. Then I create another one which is having a different kind of design. Which is like this. Again, same radius, same mass, and same angular velocity. That means it is rotating like this. All are rotating like this. All are having same mass. All rotating at the same speed. Now when it is rotating, you are holding it and trying to stop it. How much force will you require to stop this, this, and this? Relatively, comparison-wise, will you require the same kind of force in all cases? Or it will be different? Yes, sir. If it is different, then how much? I mean, in what way? Which one most, which one less, which one medium? Let us say case number 1, 2, and 3. Will you require same force to stop this rotating wheel? सर थर्ड में ज्यादा लगेगा सर, क्योंकि इसका मास जो है वो बोथ एंड पे ज्यादा है सर. Very good. So you are saying that force required will be maximum here. Yes sir. So minimum in second one. And minimum in? Second So second one. So this is minimum requirement and this is maximum. So that means this will be in the middle somewhere. Yes. Okay. Is everyone agreeing to this or not agreeing to this? Anyone has got a different opinion? Class? Anyone having different opinion about this? No, sir. Okay. So here we see that the radius is same all over, but the center of gravity, if you see, of this part of the system, it is somewhere here. Center of gravity is here of this part, and center of gravity is here somewhere. So effectively, if you see the mass distribution wise, this one is R here, this is R here, and this is R here. So actually what is happening, that this is basically a bigger wheel. In effect, physically it is looking same, but in physical terms, in its property terms, this is a biggest wheel because you can see the radius of this is from here to here. This one is only from here to here, smaller wheel, smallest wheel, and this is from here to here, medium wheel. So this one is the biggest wheel. Why? Because the mass is concentrated away from the center, which you very rightly said. So although the mass is same, this radius also is creating a problem, or rather playing a role in order to have its momentum. जैसा आपने कहा कि maximum force, मतलब इसका momentum भी सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ये radius ज्यादा है.
इसका मोमेंटम सबसे कम है क्योंकि मास तो वही है बट उस मास का रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन द मिडल समवेयर. दैट बट सर मीन्स मोमेंटम तो मास और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो दोनों तो सेम ही है ना. okay, very good, mass and angular velocity. But what we are seeing here, that mass only is not playing a role, as you are already have explained to me that I will require more force here, maximum force to stop this wheel. That means there is some other property exhibited by this and this and this. Yes, sir. अगर मोमेंटम सेम होती तो सेम फोर्स लगता. अगर उधर से कार आ रही है, Yes. उधर से साइकिल आ रही, उधर से कार आती है, उधर से साइकिल आती है, आप दोनों को रोकते हैं. आपने खुद ही बताया ना कि कार को रोकने में ज्यादा फोर्स लगेगा. तो Yes. उल्टे तरीके से अगर देखें तो ये हम बोलेंगे कि अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब मोमेंटम ज्यादा है उसमें. Yes, sir. दैट मीन्स अगर इसमें मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम ज्यादा होगी, तभी ना फोर्स लग रहा है ज्यादा. Yes, sir. So it is not only the mass but also the radius that plays a role in the angular momentum of a rotating body. And as we said, angular momentum h is equal to mass into angular velocity. But we have already seen that the mass is also, the mass distribution also plays a role. So actually it is I omega. Omega is this angular velocity. I is called moment of inertia. Moment of inertia. And is given by mr square by 2. So you see, Yes. mass to head, mass is already playing a role, but also the radius is playing a role in creating what is this called moment of inertia. Moment of inertia is more if the radius is more, and if this moment of inertia is more, then the angular velocity, angular momentum is also more. Yeah, this will be more if this is more, radius is more. Okay, sir. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Good. So having understood this, our focus will be now to gyro compass. So now that we have understood little bit about angular motion or rotary motion, now we can go to compass. The compass is a device which gives us direction. What direction do we talk about can be described in one plane or two planes. एक डायरेक्शन ये है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, नहीं मैं इधर देख रहा हूं 90 डिग्री अवे फ्रॉम यू, और 90 डिग्री अवे फ्रॉम यू स्टिल. तो इन दोनों 90 डिग्री अवे अगर बोलना होगा तो कुछ बताना पड़ेगा, तो हम ईस्ट वेस्ट बात करते हैं. आपकी तरफ देख रहा हूं तो नॉर्थ बात करते हैं. दैट मीन्स एट स्टैंडिंग प्लेस हियर I have to have a reference point from where I can measure the direction in horizontal plane like this, which will be 360 degrees. As we already know, compass course हम देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं, 0 degree, 45 degree, 90 degree, 120 degree, 25 degree, etc., etc. So a compass is a device that gives us direction, in which direction I am going. So the basic the basic job of the compass is actually not to give you the direction, but to give you the direction
of a reference point. The compass always points in a direction. ये reference इस तरफ है तो तुम इधर जा रहे हो, ये reference इधर है तो तुम इधर जा रहे हो, ये हमेशा इधर को बताता है. And that True reference north. point, yes, that reference point, मेरे sentence बोलने के पहले आपने बोल दिया, that reference point is the true north of the earth. So कहीं पे भी मैं earth पे हूं, I can measure the direction. If I am here at this place, I can be going to the north or going to the east or 90 degree all the way east or 180 degree towards south or 270 or 360. So यहाँ से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है. मैं या तो north की तरफ जा रहा हूँ, I am going either north or east और वेस्ट, नहीं इसमें इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और साउथ. ये मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ भी 360 डिग्रीज, यहाँ भी 360 डिग्रीज, यहाँ भी 360 डिग्रीज. So anywhere on the surface of the earth, I can be moving with respect to a reference point. It is always the north which is the reference. और यहीं से मेजर करते हैं कि मैं अभी 45 डिग्रीज वेस्ट में जा रहा हूं यहां से, और ईस्ट में जा रहा हूं 45 डिग्रीज, 180 डिग्री, 90 डिग्रीज. So this is what we are measuring. A compass will be always pointing to the north. The ship is here and the compass is here. When the ship is going here, we know that it is going north. When the ship is going here, it is still pointing there, but I know that the ship is going different angle from the north. How much angle? This angle, this angle. So the ship is moving all the time, but the compass keeps on pointing to the same direction. Ship may go here, ship may go here, may here. It can go south, but this will always remain pointing to north. So we need a device which can always remain constantly pointing to a direction, and that is called compass. First of the compasses were magnetic compass, which detects the Earth's magnetism. We'll study about in detail in the later part of the course. But early on, this was observed that the Earth is having a magnetism, and when a magnet is suspended, तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाकर रुक जाता है. अगर कर दो तो इधर उधर इधर उधर होकर के और फिर उसी डायरेक्शन में जाके रुक जाए. So it is always pointing to a fixed direction. तो हो गया काम. Of course इसके पीछे बहुत सारी कहानी है. तो magnetism of the earth was used to make the first compass. Then in the 20th century, somewhere the 20s के आसपास में experiments started, and somebody came out with a new idea of finding out the direction of the earth. This compass, the new one, Mr. Sperry, actually Sperry Compass Company उन्होंने बनाई after doing all that experiments. So you might have heard Sperry compasses का नाम सुना होगा आपने. So he was basically the inventor of that. उन्होंने एक नया डिवाइस बनाया which has got nothing to do with magnetism. Gyro compass uses nothing of magnetism to point to north. What it uses? It uses angular motion of a gyroscope. A gyroscope, which is a wheel rotating about an axis. Some developments done in this smart thing, a simple wheel which is turning at very high RPM. What does it?
what does it what kind of word is going in your mind right now? High moment, high RPM मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब मोमेंटम भी ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. Very good. And also very heavy as possible. That the compass is using a heavy rotor and high RPM. Both will give what? Very high momentum. High momentum. Momentum क्या करता था? जो गाड़ी चल रही थी वो चलते ही रहना चाहती है अपने डायरेक्शन में। यस सर। तो ये अगर घूम रही है तो घूमते ही रहना चाहेगी, अर्थ जैसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे। यस सर। यस सर। अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ का नॉर्थ पोल हमेशा फिक्स्ड है अपनी जगह पे या नहीं? हाँ Yes, सर। sir. फिक्स है सर। तो अगर ये घूम रहा और नॉर्थ की तरफ हो तो ये नॉर्थ की तरफ फिक्स रहेगा या नहीं? रहेगा यस सर। सर। Bingo, that's the idea of the compass. That's the whole idea of compass, that we have a rotor which is rotating at very high RPM, and it has basically a nature to point in that direction, fixed direction. It has got the nature, but there are a lot many things coming later on. There are a lot many things Yes, to sir. see. Yes. Saffron, कुछ बोले? No, sir. I'm saying okay, sir. Okay, you were agreeing. So there are a lot many other things which will be happening and very interesting things that we are going to see. So before we finish the class, only the rotor and axis is not enough. What I want, some modification to the gyroscope, what we call the free gyroscope. Remember, a free gyroscope is going to remain fixed in a given direction, but जहाज पे लगा हुआ है तो जहाज तो हिल रही है, अर्थ पे रखा है तो अर्थ भी घूम रही है, तो इसको फ्री करना होगा सारे एक्सटर्नल फोर्सेस से. So what we make, a gyroscope is converted into free gyroscope. That means there should not be any force that can affect it. अगर वो घूम रहा है और घूमते रहना चाहता है तो मैं उसके बाहर फोर्स लगाऊं तो वो डिस्टर्ब ना हो. So what we have is a gyroscope converted into free gyroscope, and here what it is. The red one is the rotor, not very heavy, but whatever I could get. This one is the spin axis, the steel one. This rotor is placed inside that ring. ये यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है, इस छोटे वाले भीतर वाले रिंग के साथ लगा हुआ है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। And Yes, sir. छोटे वाला रिंग is also fixed at this point with बड़े वाला रिंग. Okay. Yes, sir. यस सर। And this बड़े वाला ring is also fixed on this point. ठीक है? सर यस सर। इसको ऐसा क्यों डिजाइन किया गया? सर एक बार फिर से प्लीज। Let us see what is happening. Now suppose if I turn it like this at very high RPM, is it rotating? Yes, sir. यस Will it have the tendency to rotate like that and spin axis also remaining fixed? यस सर। यस सर। So see, अब मैं इसको घुमाता हूं नीचे तो देखो क्या हो रहा है. मैं इसको घुमा रहा हूं, ये घूमने की कोशिश करता है क्या? Yes, sir. हाँ सर। नो सर। It is remaining fixed kind of. दूसरे फ्रिक्शन के Yes, चलते sir. थोड़ा सा Yes, जा रहा sir. है, थोड़े सर वो दूसरे बाहर फ्रिक्शन का वगैरह. ड्रम घूम रहा है। Okay, now if you see like this, is it remaining fixed? यस सर। Yes, sir. मोमेंटम Yes, sir. उतना नहीं है क्योंकि उतना हैवी नहीं है और हाथ से घुमा रहा हो उतना आरपीएम नहीं है. एंगुलर मोमेंटम कम, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ गई तो थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है आपको. If you want to further see it,
then I must do something to increase सर the रिपीटर तो फिक्स होते हैं ना momentum. शिप में, हैं? रिपीटर तो फिक्स होते हैं ना शिप में. हाँ, repeater तो अलग चीज है. Repeater is entirely different thing. So I want to increase the momentum of this angular momentum. So what I do, I take this thread and tie it over this. देखते हैं होता है या नहीं. के माइक बंद कर लो अपना. So now what I've done, tightened a rope around this so that I can give more RPM. Do you see that it is remaining fixed? हाँ सर. Do you see Yes. that it is remaining fixed? Yes, sir. मैं घुमाता sir. हूं तो नहीं घूमता. Why? Because of Angular momentum. Angular Yes. momentum, sir. So we will break the angular momentum right now and we will go for lunch. नहीं तो momentum में हम क्लास आगे बढ़ाते चलेंगे और ऐसे ही चलता जाएगा. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. राइट, अगले क्लास में मिलेंगे और आगे बात करेंगे. बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ. बाय सर. बाय बाय.